welcome once again to another episode of Sunday Connect. Adventure Women India एक community है महिलाओं की for women, only for women. And the whole idea behind it is that we want that women should step out of their homes, they should get more active, they should become more adventurous, they should connect with other people, make meaningful relationships, travel, eat food, do new things, just be adventurous. और हम कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसा शख्स मुलाकात के लिए लेकर आए जो आपको ये सब करने के लिए इंस्पायर करे। और बहुत सी ऐसी हमारी कम्युनिटी में लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं और हम चाहेंगे कि आप उनसे मुलाकात करें। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर बानी यादव, जो कि एक रैली कार ड्राइवर हैं, जिन्होंने रेसिंग की पायनियर हैं। उन्होंने इंडिया के जितने भी मोटर स्पोर्ट के टाइटल्स हैं मैक्सिमम जीते हुए हैं, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। डॉक्टर बानी यादव, वेलकम टू एडवेंचर वुमेन इंडिया। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि हाउ डिड यू connect with Adventure Women India? So let me first thank you and my gratitude to you, Anjali, for having me over on the show and being in a tete-a-tete with all the women who love adventure and do different things. और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ मीनल ने मुझे कनेक्ट किया एंड थैंकफुली टू फेसबुक कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं कि हम आपस में कनेक्ट कर जाते हैं और एक दूसरे की खूबियों को पहचानते हैं। एंड इसी तरह मैं आई थिंक आपसे भी कनेक्ट करी हूँ और मीनल से भी करी हूँ एंड आई गॉट टू नो एडवेंचर वुमेन इंडिया एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर ऑन दिस चैट। Thank you so much, Dr. Yadav. You know, when we talk about racing, भारत में वैसे ही रेसिंग को लेकर के लोगों की उसके बारे में जानकारी बहुत लिमिटेड है. And when you talk about women in racing, I think most people don't know anything about it. So, how were you introduced to this racing concept? And आपने कैसे इसकी शुरुआत की? This is one of the very cliche questions which I keep getting, but still I would like to tell my side of the story. It is my father who has been my inspiration throughout. वो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इवन दो आज की डेट में वो 81 प्लस है, बट स्टिल ही ड्राइव्स हिज कार एंड ही इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड ड्राइवर। एंड उनको मैं देख के बड़ी हुई हूँ एंड उनको शुरू से गाड़ियों का बाइक्स का शौक रहा है और वो मतलब मेरी जो फॉन्ड मेमोरीज जाती हैं वो जाती हैं जब मैं शायद 2 या 3 साल की थी एंड उनकी बाइक पे उन्होंने एक स्पेशली सीट बनाई थी मेरे लिए ताकि मैं How बाइक sweet. पे बैठ के उनके साथ घूमने जाऊं। And I think that is where that thing of speed race and being on a two-wheeler or a four-wheeler actually got imbibed into me. एंड आई थिंक सारा श्रेय उन्हीं को जाता है कि आज की डेट में अगर मैं रेसिंग कर रही हूँ, कार रैलीज कर रही हूँ, तो इट इज थैंक्स टू माय फादर। Oh, that's so you got the taste of speed at a very young age in your life. Absolutely, एक बार absolutely. चख लो उसको, एक बार मुंह पे खून लग जाता है तो कहते फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है। तो लेकिन you know, we all associate रफ्तार, speed with a little bit of danger. Yeah. आपको कभी कहा नहीं क्या नहीं ये तो बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है, क्यों करना है? आई थिंक शायद एवरीबडी टिल डेट हैज टोल्ड मी दिस वन थिंग कि रेसिंग तो बहुत डेंजरस है एंड एक्सीडेंट भी हो सकता है, इट इज़ अ डेंजरस स्पोर्ट। देर इज़ नो डाउट मोटर स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट, बट वी डू नॉट गो अनप्रिपेयर्ड इन इट। हम हमारे बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारी सीट बेल्ट, हमारी गाड़ियाँ उस तरीके से प्रिपेयर्ड होती हैं, हमारी सीट्स ऐसे होती हैं कि जो हमारे को बिल्कुल टाइटली अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। And it is more of your own control over the vehicle and how you race the vehicle or how you drive the vehicle. Yes, I think everybody thinks it is a dangerous sport, and to some extent there have been casualties, there have been accidents, freak accidents also. But then it is true for any sport. You can have accidents in any sport,
And the only thing is because this is a very fast action paced स्पोर्ट, सो लोगों को वो एक नज़रिया मिल जाता है सोचने का। बट अगर मेरे नज़रिए से देखें तो हम बहुत सेफली ड्राइव करते हैं। येस, वी पुश आवर लिमिट्स, बट देन वी आर स्टिल सेफ इन दिस स्पोर्ट। लेकिन ये भी कई लोग कह सकते हैं क्या ये महंगा है टू हैव दिस काइंड ऑफ यू नो अ प्रोफेशन टू रेस? इज दिस अ एक्सपेंसिव जॉब और एक्सपेंसिव हॉबी? It is a very, very expensive hobby, and I earn just to splurge on this sport. I also am working, I am a corporate employee. But yes, a normal person to actually get into motorsports, you really need to have deep pockets in it. आप छोटा मोटा तो कर सकते हैं रेसिंग की, आपने जाके एक कोई एक दिन के इवेंट में पार्ट ले लिया, अपनी नॉर्मल जो आपकी घर में गाड़ी है उसके साथ ले लिया। बट इवन फॉर दैट वन डे ऑफ डूइंग स्पोर्टिंग इवेंट विच वी कॉल ऑटोक्रॉस, उसके लिए भी यू शुड बी रेडी टू शेल आउट एनीवेयर बिटवीन 25 to 50,000 rupees in a day. Oh my God, एंड that's या expensive. एंड आपकी गाड़ी का अलग टूट फूट, देखिए आप जब चलाएंगे उसको रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ डैमेज तो जरूर होता है। तो यू शुड बी रेडी टू बेयर दोज कॉस्ट ऑल्सो। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म रेसिंग देखें, एक प्रॉपर रैली देखें, सो इट इज़ डेफिनेटली एक्सपेंसिव। कोई भी रैली हमारी अगर 3 से 5 दिन की है तो बिसाइड्स द व्हीकल, आई एम सेइंग कि आपकी व्हीकल लेट्स से ऑलरेडी आपकी व्हीकल है आपके पास, आप उसको प्रिपरेशन में ही आप उसमें 7 से 8 लाख रुपए लगा देते हैं। एंड फिर आपके ओवरहेड कॉस्ट हैं, आपकी एंट्री फीस है, आपकी नेविगेटर है, आपकी सर्विस टीम है। तो यस, इट इज़ एन एक्सपेंसिव स्पॉट। अगर आप एक नॉर्मल वर्किंग मिडिल क्लास फैमिली हैं तो थोड़ा सा पॉकेट को हिट कर सकता है। Is the scenario changing? Do you see more women getting into it? And the women who are getting into it, how do they get attracted to it? Yes, the scenario is definitely changing, and more women are there. Earlier, when I had started racing, they were at the max maybe 2, 3 women who were there, and they were also not regular into all the rallies or races which were happening. And I think now over the years I have seen at least there would be 100 plus women who are doing various formats of racing and rallying. So that's a very good healthy sign. और मैं आशा करती हूँ आगे आने वाले सालों में हम बहुत सारी और महिलाओं को देखेंगे, लड़कियों को देखेंगे जो इस स्पोर्ट में आएंगी, अपनी एंट्री करेंगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई सी कि अब पेरेंट्स या फैमिलीज भी सपोर्ट कर रही हैं गर्ल्स को इस स्पोर्ट में लाने के लिए। एंड आई सी पेरेंट्स कमिंग देयर, स्टैंडिंग, मोटिवेटिंग अपनी वाइफ्स को, अपनी बेटियों को। सो दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन। एंड आई थिंक ओवर द फ्यू इयर्स हमारे पास जो स्पेंडिंग पावर है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। यू सी अ लॉट ऑफ वुमेन ऑन द रोड ऑल्सो ड्राइविंग, so they are testing their skills, and that's a very, very healthy thing to do, because when you start to drive on the roads, normal roads, that means your confidence level is building, and that is why you are there. Your families are trusting you with the vehicle, and that is the first step to going into the next level and starting off in a motorsport game or a rally. So I think it's a win-win situation for everyone. That is true. Driving is one of the most liberating things for women, and I think जो लैंडस्केप में चेंज भी आया, अगर आप सड़कों पे देखें और खासतौर पे बड़े मेट्रोस के, तो जितनी महिलाएं गाड़ी चला रही हैं, दिल्ली में जितनी महिलाएं गाड़ी चला रही हैं, उसका फर्क पड़ता है। और विमेन बिकम मोर एम्पावर्ड, विमेन फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन दे गो आउट, स्टेप आउट विद द कार। आई थिंक कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी कि ये चीज पुरुषों के लिए, ये चीज औरतों के लिए, इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए इस तरह के स्पोर्ट्स में महिलाओं का जाना जरूरी हो जाता है। एब्सोल्युटली। वो तो है ही। देखिए, जब तक हम सारे मिल के एज अ सोसाइटी विमेन को सपोर्ट नहीं करेंगे एंड एक माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे कि ड्राइविंग सिर्फ मेल डोमिनेटेड चीज़ है। आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जो लेडीज को मना भी करती हैं कि नहीं, तुम गाड़ी ले जाओगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी आप कहीं ठोक दोगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बट
there is a definite shift in the mindset, and that is where the change begins. जब आपने अपने घर में एक लेडी को वो फ्रीडम दी कि वो जाके गाड़ी चलाए, मार्केट जाए, ऑफिस जाए, तो कहीं ना कहीं तो शिफ्ट हो रहा है माइंडसेट। आप उसको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, आप उसको एम्पावर कर रहे हैं, आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। एंड जब एक लेडी इज मोबाइल, वेदर ऑन अ बाइक और अ स्कूटी और अ कार, then she is डूइंग अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग ऑल्सो। घर में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसकी फैमिली की तरफ से भी, बिकॉज शी इज डूइंग सो मेनी मोर थिंग्स which helps to support the family, and I think in exchange the family is also definitely supporting the women. एब्सोल्युटली। मैम, आप क्या मानती हैं कि क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, विमेन हु ट्रैवल, वो लोग गाड़ी निकालना और गाड़ी में ड्राइव करके ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं। दे थिंक इट्स लिटिल अनसेफ। हिंदुस्तान में सड़कों का जो हाल है या जो दूसरी फैसिलिटीज का है, क्या ये ट्रेंड भी महिलाओं में आ रहा है, या यू थिंक स्टिल देयर इज सम टाइम, देयर इज सम वे टू गो फॉर अस टू कैच अप विद दैट ट्रेंड? It's a very pertinent question which you have asked. I would still say it is not that safe right now. uh, yes, things are changing, but कि आप गाड़ी उठाइए and आप रात को निकल गए, थोड़ा सा एक बैक ऑफ द माइंड में हमेशा एक डाउट रहता है कि आप सेफली पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। एंड स्पेशली फॉर द women, hats off to them who are bikers and who go on solo trips. It takes a lot of mental strength, physical and emotional strength to be able to do that kind of biking, to go on solo trips. Same goes for women who are in cars, because आपका कहीं भी breakdown भी हो सकता है, एक flat tire भी हो सकता है, and you might be stuck in a place where there is no help, or there might be so many people that you are at a confused level of what to do next. So things are changing, but yes, we need to be careful on our end also. And आई थिंक एज कलेक्टिवली हमें एक दूसरे को एम्पावर करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इफ स्पेशली women who are traveling, they should have their points marked or contact people at every location or the city they are traversing, so that at any given point of time अगर कभी हेल्प की ज़रूरत हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो कोई ना कोई आपके लिए अवेलेबल हो। So that's a good way of traveling pan India or across the world also. Those are some great tips, and I hope, जैसा कि आप कह रही हैं कि कल्चर थोड़ा चेंज हो and traveling becomes a little bit more safer for women, because currently you're right, it is not that safe. Thank you very much, Dr. Yadav, for speaking with the AWI. और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको हमारे ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, because we will really look forward to your posts on the group. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure being here. Thank you. Thank you, ma'am.